Good afternoon to all. As we proceed towards the culmination of the event, I welcome you all to the sixth and the final day of online one-week short-term program on Indian Knowledge System, jointly organized by Department of Commerce, Institute of Lifelong Learning, and Shriram College of Commerce, University of Delhi. Today, we will be having two sessions on Indian Knowledge System, followed by a valedictory session. I request all the participants to kindly remain available for the same. The attendance sheet for the valedictory session will be shared separately. It is a great pride to have Professor Simrit Kaur as our esteemed resource person for today's session. Professor Simrit Kaur is the 15th principal of Shriram College of Commerce. She is Professor of Economics and Public Policy. She has been visiting professor at several universities worldwide. She has several published papers and books to her credit. She has undertaken several research projects and acted as an advisor to institutions and organizations at national as well as international level. Thank you, ma'am. Thank you for taking out time from your busy schedule. Over to you, ma'am. Thank you so much. Once again, a very warm good afternoon to all the participants, and of course, a complimentary and congratulatory note to the organizers. Shriram College of Commerce is also one of them. So I also take this opportunity to personally thank Dr. Deepika and Dr. Shikha, who have been working on it, ILLL and the Department of Commerce. Thank you for this opportunity. When we talk about the traditional Indian mercantile system, it is very important to understand the relevance of trade. And trade has actually played a very important role in understanding what would be the level of economic development of a particular country. And when we discuss the flow of today's 1.5 hour session, primarily is going to take place through these four various aspects. We will discuss what is the significance and relevance of trade and briefly inform what are the views on international trade from a historical perspective. Because with time, how much emphasis we have been given to trade, somebody saying it's very important, it is the only way of attaining welfare for the public, to the present systems where sometimes there is a lot of restriction which is imposed on the trade system. So we are going to briefly discuss all this. India is a more major global economic power, and this we would be discussing from a historical perspective and what were the major reasons that India attained a very important economic power situation just before the advent of the British rule. And for this, we will be talking about what were the commodities that we were primarily exporting and importing, what were the major centers which had developed during the historical perspective in terms of both inland trading and also in terms of the water trading. What were the important routes, and this generally are the sea routes which we are talking about, specifically the spice route and the silk route, and what were the important reasons which led to this major increase in India becoming a global trade economic partner. I will take it more of as a storyline rather than in the form of a PowerPoint presentation. And Amarjit, you can do away with that. So when I discuss that, let us see what is the historical perspective of trade. And why is it that till date we give a lot of emphasis to trade? Please understand, in today's scenario, India is considered more in terms of a closed economy because not a substantial part of our GDP is coming from the export minus import component. So if your GDP is measured as C plus I plus G plus net exports, then net exports is not that important a component from where GDP is coming. But this was not true in a perspective where we are even going before the about 2000 to 3000 years ago. It was not the scenario, and a major proportion of India's economic development was because we were an important international trade partner, not the domestic trade partner. Why is it that at that point in time when we were trading,
it led to so much of economic wealth accumulation in India. For this, it is important to understand how does trade take place and how are the transactions settled in an environment where you do not have the present day currency. And in earlier times, very importantly, most of the times your net trade was always settled in precious metal, primarily gold and silver, which means whenever India was exporting to, let us say, Egypt or the other Mesopotamian areas, if we were net exporters, the final amount was settled in gold. And there was a time when India actually had accumulated almost 14% of the total gold reserves of the entire globe. And it's not that India is a gold producing country. So, from where was this gold coming? It was because we happened to be net exporters with most of the nations with which trade was taking place. So, obviously, there must have been some reasons why we ended up accumulating extreme amount of gold. One is our quality of the goods must have been good. We must have had comparative advantage. Our institutions and governance must have been very strong. So the idea here is to inform you what these structures were that for a very long time, almost for 2000 years, our GDP as a proportion of the world GDP was almost close to 25%. If we were at 25%, India's GDP, the India is the erstwhile India, which also now has countries which are no longer part of India, for example, Pakistan and Bangladesh. So we are talking about the erstwhile systems. 25% of the global GDP was being contributed by the historical definition of the Indian economy. This is immense. And by the time the Britishers had left us, it had practically dwindled to negligible proportions. Now, when it was at 25%, it is a point of reflection to understand whether we were at a level where we reached 25, where the levels were even higher. For example, it was 35%, 30%, and then it had come to 25%, because the most dated data that we have is when it was 25%. Prior to that, there is no data. So it is very much possible that we were even above 25% prior to that. Alternatively, it is possible that we were 15%, 20%, and then we had reached 25% the first time when data was collected. So we don't know, it becomes a hypothesis kind of a thing. But 25%, irrespective of whether it was a declining or a rising trend, is a number which nobody can negate. India was, in fact, an economic superpower in the globe. We were very well respected. Our items were actually demanded by most of the nations where we were trading with. And it was a vast area that we were trading with. Now, when we were accumulating gold, this at that point in time, we did not have the present system where you could print your own money in terms of currency. So, gold standard, you could print only as much money as you had the gold reserves. So, if we have 1 billion worth of gold reserves, we can print money only equivalent to 1 billion. And that is the reason at that point in time, the notes or the coins of copper, etc., when they were printed, it would always say they were backed by gold. So even if you had a paper note, it would say, I promise to pay the bearer gold equivalent worth so much, because that printed paper money had a corresponding gold reserve. Nowadays, it is not that we can print as much money so long as there is some minimum amount of gold reserves and foreign exchange reserves with the RBI. Therefore, in today's times, when you look up your currency note, it says, I promise to pay the bearer a sum of equivalent amount. If it's a 200 rupee note, I promise to pay the bearer equivalent amount of 200. Nowhere does it say, I promise to pay the bearer gold equivalent, gold of 200. No, because we don't have gold reserves. Now, when your trade depends upon the amount of gold you have, because your money in circulation is backed by gold. So accumulation of gold is extremely important.
And because you are not mining gold within your own country, the only way the philosophy was, economic philosophy was, let us export more and let us import less. The moment you have this as your philosophy related to international trade, this philosophy is referred to as the philosophy of mercantilism. Mercantilism even prior to the classical era. So, according to them, trade could never ever lead to a win win situation for both the countries in a two world scenario. Why could it not lead to a win win situation? Because if India is a net surplus in terms of exports, the other country will have to give its gold reserves to us. On the other hand, if India turns out to be a net importer, then gold will have to be given from India to the other country. And that is why in the mercantilism system, it is referred to as a system of zero sum game. So, gains from trade ultimately, from a global perspective, was a zero sum. One country's gain had to be negated by the offset in gains to the other country. Now, if we adopt this philosophy, it's very difficult to promote trade because every country's objective would be increase export, decrease import. So, if India is trying to adopt this philosophy, our partners in trade would also be adopting the same. But over time, by the time we came to the classical era, and there is some PowerPoint which will be backed by what I'm saying, it does take us to the classical era. In the classical era, I will just show you the slide. There are different philosophies where you have the first one of the theories which says it's a classical system, and under the classical system you have Adam Smith's theory which states that absolute cost advantage is very important. So if you look up point 2 under the 2 point, point 2 under 2 is the classical era, and point 1 under point 2 I've already said is the pre-classical era which was called mercantilism, and trade ended up to be a zero sum game. But in the classical era there are several theories. For example, we have the absolute cost advantage theory. It was given by Adam Smith. It says if there are two countries and if one country is having an absolute advantage in production of commodity X and the other country has an absolute advantage in production of commodity Y, then these two countries will stand to gain if trade takes place. So if India has an absolute advantage in commodity X, we should export commodity X and import commodity Y, and the other country should be exporting commodity Y because it has an absolute advantage in commodity Y. Now, somewhere there was a problem with the absolute cost advantage theory. We've written the name of Adam Smith if you have a look. And the problem with this Adam Smith absolute cost advantage theory was trade can take place only if one country is better off than the other in terms of absolute advantage. But it is very much possible that one country has an absolute advantage in both production of both the goods X and Y. So country A has an absolute advantage in production of X and Y. Under the absolute cost advantage theory, trade cannot take place. But under the comparative cost advantage theory, which was given by Ricardo, it is still possible for both the countries to have a win-win situation. And how is there going to be a win-win situation? It is very simple example. I will say, I see Dr. Deepika, so I'll put the example on Dr. Deepika. Dr. Deepika is a better teacher and she also has a faster speed of typing. But now she has to do both the works vis-a-vis the other person who's not so good at typing. Now, Deepika's relative advantage is she's a better teacher than a better typist. But in absolute terms, she's still typing faster than the alternate person. Even under these circumstances, trade can take place. Dr. Deepika will take up that activity in which she has a comparative advantage. And the other person who has a
absolute disadvantage in typing will still be doing the typing for Dr. Deepika because she has a comparative advantage in her own self. She's a better typist than a teacher who's teaching. So trade can take place even when there is absolute advantage of producing both the goods in a particular country. Then we, of course, have Heckscher-Ohlin and other theories. We are not getting into it. But the storyline that we are trying to build so far is simple. Number one, very olden times, mercantilism stated accumulate gold, that is the most important thing for determining your economic power. So objective for all countries was export more, import less. And this assumed, it philosophized that trade is a zero-sum game. But later theories by Adam Smith, by Ricardo, by Heckscher and Ohlin did make trade a win-win situation. So most of the countries started trading. There are theories which state how trade can promote and sometimes even become an engine of economic growth. Southeast Asian countries adopted this, and their growth story is primarily where export becomes an engine of economic growth. We then have the neoclassical. It's leaning towards the free trade, but then comes an era when each of us starts protecting our own economy. Protection in terms of not going in for too much of imports. So we either go in for import substitution policies, we don't want to import too much, and we are trying to protect our infant industry. And we set up very high tariffs because the tax on imported goods is a tariff. And on the other hand, any activity that we want to subsidize in terms of production, then subsidies were also given. With this kind of a background, I will bring you another very important concept, which is known as currency, where the face value is equal to the intrinsic value. Face value is equal to the intrinsic value, and related with the other case where face value is much more than the intrinsic value. And we will study how it impacts trade. Let's take gold. Gold has 10-gram gold has a face value. It has an intrinsic value. Intrinsic value is what I will get in the market if I sell it. And if I cut that gold coin into 1/10, I will still get exactly 1/10 for that gold coin because the face value of that gold coin is exactly equal to the intrinsic value. But in today's terms, when I have a 1,000 rupee note, 2,000 rupee note, I cut it into 1/5. And then am I going to get 1/5 of the return? No, it has a zero value. In fact, I will not even be able to get back the printing cost of that 2,000 rupee. So is there an incentive for me to cut my notes into 5 and then utilize it for 5 transactions in the market? No, because it loses all its value. But with gold, it is possible. So what people did, if I get a gold coin, I put it in a sack or I put it in acid, take out some amount of gold, illegally, unofficially, accumulate that gold, and then separately go to the market and buy something. And it used to happen my time, my mother would get her bangles cleaned by the person who would be on the roads cleaning the bangles. And we would be so happy, he's taking less money, so let me get my bangles cleaned from him, not knowing how much of it has gone into the acid. And he would go home with his chemical process, he would extract the gold and the remaining is water and it goes away. So when everybody started doing, we realized that gold has started inhibiting trade because every time the gold would exchange hands, we would all wait again. Because we don't know whether it's going to be 10 grams or whether it is going to be 9.89 grams by the time it has exchanged hands. Somebody has taken away the dust, somebody has taken away the weights, etc., etc. And therefore, it was felt that it's not good to have currency in the economy where the face value is equal to the intrinsic value.
But an advantage was it never led to too much of inflation because money supply in the economy was controlled. It was backed by the amount of reserves that you have. So RBI or any other central bank cannot artificially keep on printing money if you want to have a better economic growth. So there are pros and cons to this. Even before the gold, there was the barter system. And I'm talking again about the traditional ancient times barter system. The major problem with the barter system is double coincidence of wants. I have wheat, but I need shoes. So I will have to find a person, one, who needs wheat, and second, must have shoes to supply to me. So the coincidence has to be two times. As we mentioned, number one, the coincidence is that person must need wheat and that person must have the shoes. Very inhibiting, very difficult to find. And what if the shoes are costing 5 kilograms of wheat exchange, but I have only 2 kilograms of wheat to exchange? So again, a problem. He can't give me 50% of the shoe. So there are issues which are coming up. Now try and understand, despite these inhibitions, despite these obstacles, India is still becoming an economic power, controlling 25% of the global GDP and very close to 15% of the gold reserves. So there must have been really something within the Indian economy that despite these challenges, we have been able to retain and maintain our very high levels of global GDP contribution at 25%. Of course, it has dwindled substantially during the British period, but because we are talking more from a historical perspective, we are not necessarily getting into that. Now, with this kind of a background, let's try to understand and move on and see what are the factors which led to our very high our becoming a global economic power. And when I talk about global economic power, it's through trade, international trade primarily. And international trade is from the sea routes, from the ports, but for any port to run, you must have a very strong inland system of supporting what is taking place at the seas or at the ports. If I now go back to the Vedic era, the first thing which comes to the mind is Harappan and Mohenjo-daro. We've all studied so much about these civilizations. I think one of the most ancient civilizations of our times. And in addition to the kind of planning with which these cities were there, these cities were very good in terms of the links that they had with some of the Western world. And Mesopotamia was actually an Egypt side, Arab side. These countries were trading with those countries. So what was the reason that we ended up having this wonderful system? There must have been certain factors leading to it. So if some participants could just for discussion think and contribute in terms of a participative approach, what could be the reasons that India dominated its position as an economic power through international trade? We are all open. I would encourage audio questioning and interruptions rather than in the chat box. So, Dr. Shikha, is it possible for the participants to speak? The participants could unmute themselves and please participate in the discussion. आपके हिसाब से ऐसा क्या है जिसका? Yes, please. I think, is it because of the spices? Ma'am, could you also introduce yourself? I'm Dr. Anju Kakkar from Venkateshwara College, Biochemistry Department. And I don't know, I'm just thinking, is it because of the spices that we have? That is certainly one of the reasons, and very good, because ma'am, we normally think from an economic perspective, and I have a faculty from the chemistry department listening to the economic side of the story. So yes, ma'am, spices played a very important role. Role there, yeah. Yes, certainly. Other faculty, please.
Yeah, myself Savita Rastogi from Jesus and Mary College in Commerce Department. So I believe the reason is because sea routes were followed and India is surrounded by three sides, by the sea. So that may be the reason. Yes, ma'am. This is actually a very important thing that you are saying. Our positioning on the world map is very important. So, if we have Himalayas in the north, then there is a peninsula at the south, and there is a lot of coastal area. And this, yes, permitted us to take up international trade through the sea route, which is actually cheaper than the land route. So, yes, ma'am, you're right. Thank you so much. Anybody else? मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रण दिया। मैं पटना से डॉक्टर चंदन कुमार बोल रहा हूँ, जी सर। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से। और जैसी आपकी व्याख्यान रही उस तर्ज पर मैं कह सकता हूँ कि आपकी अदालत में भी आपने बहुत अच्छे से निर्णय लिया और आज भी आपने मुझे जज करने के लिए दिया। तो मैं कहता हूँ कि WTO की तो बात होती है, मुझे ऐसा लगता है स्वदेशी स्वभाषा स्वधर्म के आधार पर ही आर्थिक नीतियां निर्मित होनी चाहिए, तभी राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। सर आपने डिपार्टमेंट नहीं बताया अपना? जी मेरा विधि है, विधि। ओके ओके। और पाटलिपुत्र तो सर हिस्टोरिकल टाइम्स में भी इट हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर, बहुत ही उसका मान्यता है, पुराने जमाने से चलती आ रही है। इट हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जी, so I think participants are already very aware of what could have been the reasons. Perfectly fine, and fortunately some of them are also documented. अगर आप लोगों ने कौटिल्या's अर्थशास्त्र का नाम कितनों ने सुना है? I think we will not talk about economics and commerce, but others from allied departments. I think all of us, we've been hearing it, now since the last 3-4 days. So all these seminars have been going on. So we all are probably aware of it. So that is wonderful, ma'am. आप लोग 3-4 दिन से सुन रहे हैं, तो आज आपकी नॉलेज मुझसे ज्यादा होगी। तो let me again hear from somebody. What do you hear about Arthashastra's role in the planning, governance, and economic policies that India adopted, which were differentiating features vis-a-vis other countries? ऐसा क्या था उसके अंदर पॉलिसीज में? मैम अगर आप मुझे अनुमति दे तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो कौटिल्य, जिनको चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही हुआ था, तो आज भी अर्थशास्त्र में जो विषय है उसको प्रबंधन का एक शाश्वत ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि जो प्रासंगिकता कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में दी थी वो शब्दशः आज मैनेजमेंट के बच्चों को भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि इस तरह के राजनीति और अर्थशास्त्र का सम्मिश्रण किया गया, जो हमें लगता है कि वो 21वीं सदी का एक महानतम ग्रंथ मैं कहूं तो अतिशोक्ति न होगी। तो मुझे लगता है कि ये पाटलिपुत्र की धरती से ही जो है अर्थशास्त्र का निर्माण हुआ है और अर्थशास्त्र के विषय में हम लोगों को ज्ञान हुआ है। जी सर, ओके ओके, ठीक है सर, बिल्कुल। हमारा जो गवर्नेंस मैकेनिज्म उस समय के प्रिंसली स्टेट्स का था, किंग्स का था, दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। और हम लास्ट की आते हुए हम और भी इसके ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इट इज very important to understand कि India always maintained the quality of the products it was exporting. And there was something known as a flexible manufacturing system, जो आज की तारीख में भी बहुत important है. What happens is in today's world, supposing I start with today's world and then go back to the historical era, demand is very dynamic. Every day demand trends are fluctuating, और उसको सप्लाई करने के लिए प्रोड्यूसर्स आर द वंस हु आर सप्लाइंग. सो इन अ टिपिकल फ्रेमवर्क ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इक्विलिब्रियम तभी आएगा अगर आपका डिमांड मैचेस विद द सप्लाई. In the earlier times, there was no information technology, there are no telephones, and the only way of communication was word of mouth. और वो भी आप सोचिए, अगर आपको इजिप्ट से कोई मैसेज वेस्ट बंगाल तक भेजना है तो द टाइम दैट इट वुड कंज्यूम, इट्स इमेंस.
under those circumstances, how was it possible that artisans in West Bengal came to know what had to be exported either to any place rest of the world? The linking factor between the households who are artisans and what is being demanded from across the globe was the merchant class. So flexible manufacturing system diversified the producers from the distributors. So producers are the ones who are producing at home because we don't have industrialization at that time. वो तो later years में आई है. Otherwise, earlier manufacture word comes from two words. It is a Latin word. Actually, it's originating from a Latin word. One is, the two words are manu and the other is facer. उससे आज की तारीख में अडेप्ट होते होते ये मैन्युफैक्चर बन गया. मैन्यू का मतलब होता है मैनुअल. मैनुअल मीन्स यू मेड फ्रॉम हैंड एंड फेसर इज टू मेक. सो व्हेन यू मेक समथिंग विद योर हैंड्स, दैट इज मैन्युफैक्चर, coming from the original word Latin, which is manu-facer. So manufacturing, you're making something with your hand. With industrialization, production moved from production by hand to production from machines. लेकिन originally जो word आता है manufacturing, because you don't have so many machines, so you are utilizing your own handicraft and your own skills to make something. And we were very good at things which were produced by hand. So handicrafts, we were very good. Textiles, we were superb. In fact, most of the trade which took place at that point of time globally was in terms of textile. The very fact that India was accumulating more and more of gold means that we were actually net exporters for a very long time, because हमारा gold तभी accumulate mercantilism के तहत होगा if we are net exporters. And our most important items which we are exporting was actually the textiles. In addition, there were certain other things, but textile export has played the most important role in India collect so much of gold reserves. So when we are talking about the word manufacturing, and today's topic is mercantile trade in historical, in traditional times. So mercantile trade, एग्रीकल्चरल गुड्स में स्पाइसेस तो थी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में वो ज्यादातर टेक्सटाइल्स में थी एंड नॉट द मशीन मेड गुड्स. सो यू मस्ट अंडरस्टैंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कैपिटल गुड्स एक्सपोर्ट. सो मैन्युफैक्चर इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आर द हैंडमेड टेक्सटाइल्स. Unlike today's era where most of the manufacturing automatically the mindset it is something to do with capital intensive industry or technology driven industry, not so much in the earlier days. And हमारे कोलीग ने बहुत अच्छा एक WTO का भी आर्ग्यूमेंट बीच में लेकर के आए थे. Now World Trade Organization is the organization which today tries to regulate trade. उस जमाने में ट्रेड कौन रेगुलेट कर रहा था? आपकी अपनी किंगडम्स. सो इंडिया का जो भी था उस समय का राज्य, वो अपना ट्रेड को रेगुलेट कर रहा था, एंड देयर वर सेवरल प्रिंसली स्टेट्स एट दैट पॉइंट इन टाइम. सो इट वाज डिफिकल्ट बिकॉज यू डिड नॉट हैव अ कॉमन बॉडी टू रेगुलेट द ट्रेड. और अगर आप बहुत पुराना डेटा भी देखें तो भी उसमें दिखता है कि कहीं ना कहीं जो टैरिफ लगता था, इट यूज्ड टू वेरी फ्रॉम 1/10 प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट टू 1/25 ऑफ द प्रोडक्ट. इसका मतलब 10% तक का टैरिफ भी चलता था, कॉमन था ये. दिस हैड ऑल्सो बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शंस फॉर द किंगडम्स. और फिर आपको आर्मी रखनी है, सो ये वाला जो मनी किंगडम्स में जाता था, राज्यों के पास जाता था, उससे दे वुड डू देयर ओन एडमिनिस्ट्रेशन एंड दे वुड टेक अप देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज एंड एक्सपेंडिचर ऑन सोशल वेलफेयर. वो भी तो उस समय चलता ही था. Today, W2 is regulating. Now, the problem in today's world, which was not there in the historical world, is the following. Recent years के अंदर ट्रेंड आया कि जब इतनी every economy is trying to protect its national economy, it's not good. So,
we all were forced, we all meaning globally, all countries were forced to actually start reducing their tariff rates on manufactured goods. So India का भी tariff कभी कभी 1000% तक था because we wanted to protect our own Indian industry. So tariff rates sometimes were even as high as 1000%. But under a unique body which is the WTO, we were forced to bring it down. उसके अंदर डेवलपिंग कंट्रीज ने क्या आर्ग्यूमेंट करा कि आप डेवलप्ड कंट्रीज जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नाउ आई मीन मैन्युफैक्चर्ड इज मोर ऑफ द कैपिटल रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग, more related to industrialization, post industrialization. Fine, you want that the world should be flat, there should be freer trade. हमने करा, लेकिन अभी तक WTO ये नहीं लेकर के आया कि जो एग्रीकल्चरल गुड्स को वेस्टर्न वर्ल्ड सब्सिडाइज कर रहा है, उसके कारण डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया अपना एग्रीकल्चरल गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं. अंडरस्टैंड अगेन, आई रिपीट, रीजन क्या हो रहा है? यूएसए एंड यूरोप आर सब्सटैंशियली सब्सिडाइजिंग देयर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. इनफैक्ट पूरा लैंड फ्री दिया जाता है, पूरे सीड्स फ्री दिया जाते हैं, पूरा फर्टिलाइजर फ्री दिया जाता है. और इंडिया के अंदर जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है सब्सटैंशियल है, लेकिन व्हेन यू कंपेयर सब्सिडीज गिवन टू एग्रीकल्चरल फार्मर्स इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, दे आर स्टिल मच लेस than the subsidies which are provided to farmers in the Western world. So the prices of the goods, agricultural goods in the Western world will be lower, क्योंकि वो तो सब्सिडाइज प्रोडक्ट है, उसको तो आप 10 रुपए में भी बेच दो, आपको तो पूरा सब्सिडी गवर्नमेंट ने दिया है. और भारत के अंदर वही चीज आप 10 में बेच ही नहीं सकते हो because you have not received a subsidy. So Indian product, let us say, is now going to be selling it at 16 rupees because it is a non-subsidized product. And even if it is a subsidized product, the proportion of subsidy for Indian agriculture is much lower than the proportion of subsidy given to the Western farmer. तो हम मांग क्या रहे हैं WTO में? अगर आप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की टैरिफ डेवलप्ड कंट्री बोलती है डेवलपिंग को नीचे लाओ, तो डेवलपिंग कंट्री आप लोगों को बोलती है कि आप अपनी सब्सिडीज एग्रीकल्चरल गुड्स को कम करो, तभी तो फेयर प्ले होगा. दे आर नॉट एग्रीइंग टू इट. सेवरल राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस हैव टेकन प्लेस. So it's much easier for them to propagate a reduction in the tariff on manufactured goods, but they are not willing to accept reduction in subsidies on agricultural goods which are produced by the Western world. सो फेयर प्ले तो अभी है ही नहीं ना. मैन्युफैक्चरिंग में तो आपने डेवलपिंग कंट्रीज के लिए मार्केट खोल दी क्योंकि उन्होंने टैरिफ कम किया, तो वेस्टर्न वर्ल्ड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स विल कम टू इंडिया. बट व्हाट अबाउट द डेवलपिंग कंट्रीज एग्रीकल्चरल गुड्स? एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो उस जमाने में नहीं थी और आज के जमाने में है इज क्लाइमेट चेंज. अब तो आपको रेगुलेशंस के तहत यू कैन नॉट हैव CO2 emissions above a certain limit. So all countries have been given that upper limit of CO2 emissions. हर country का vary करता है, but we have this upper limit. Carbon trading भी होती है. If I am producing more of leather, I am producing more of tannery, it is a more polluting industry. और सबसे भयानक बात, हम लोग जब अपनी राइस को एक्सपोर्ट करते हैं, हमने सिर्फ राइस नहीं एक्सपोर्ट करा, हमने अपना वाटर भी एक्सपोर्ट करा, बिकॉज राइस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स विच इज मोस्ट वाटर कंज्यूमिंग. एंड विच कंट्री इज नाउ एक्सपोर्टिंग राइस? इंडिया इज एक्सपोर्टिंग. एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ वाटर? वी आर अ वेरी 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 स्केर्स वाटर कंट्री. वाटर है ही नहीं, वी आर अ हजार्डस कंट्री. So we have to think about export and import not just in terms of the commodity, but also in terms of what the commodities impacts will be on climate change and what the amount of water that is being consumed by the commodity. So आपका जो objective function trade का है आज, वो सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए. आप जितना मर्जी राइस एक्सपोर्ट करके, let us say we are a huge rice surplus economy, but will we be justified to do that? Agricultural goods are also CO2 emitters.
तो पैसा पैसा के ऊपर आजकल आप जा ही नहीं सकते. द कॉन्सेप्ट ऑफ overall economic development, which in historical perspective was more of gold accumulation, has now tilted towards a broader concept of not mitigating or having very adverse effects on climate, not letting water scarcity to even become more worse. So challenges आज भी हैं, challenges पहले भी थे, लेकिन आज एक challenge बिल्कुल भी नहीं है जो पहले था, वो IT. Click of the button, you know what a person in USA is demanding. You know what Egyptians are demanding. You know what Southeast Asia is demanding. Earlier, it was not known. So I come back and I relate the story. Who was doing this? The merchant was doing it. Merchant is a distinct class from the producer. The artisans sitting at home are the producers. उन्हें नहीं पता बाहर क्या हो रहा है. Merchant travel कर रहा है, वो seaports के साथ connected है, उसको इंफॉर्मेशन ज्यादा है, वो आकर के बताता है कि डिमांड आपके टेक्सटाइल्स की मुझे 20% ज्यादा चाहिए. अब जब 20% ज्यादा चाहिए तो घरों के पास तो कैपिटल है नहीं कि 20% ज्यादा करें, हाथ ही हैं आपके पास तो. सो यू कांट इंक्रीज योर प्रोडक्शन बियॉन्ड द नंबर ऑफ आवर्स दैट यू वर्क. सो वेयर इज द एक्स्ट्रा प्रोडक्शन गोइंग टू कम फ्रॉम? दे वुड एक्यूमुलेट द हाउस होल्ड्स. तो उनको पता था इस घर के अंदर, इस विलेज के अंदर, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर 100 हाउस होल्ड्स हैं. सो उसमें से 50 लोग मुझे ये सप्लाई कर रहे हैं, बट देयर इज अ पोटेंशियल सरप्लस ऑफ अदर 20 हाउस होल्ड्स. इफ आई गो एंड इन्फॉर्म देम, they will also reorient their production, move away from spice production towards, let's say, textiles, because textiles are in demand. So the classification, diversification between one group which was a merchant class and another group which was a producing class helped us meet the excess demand created in the international market through the merchant who would disseminate the information to the household. आज की तारीख में क्या होता है, मैं कोई दवाई मंगाती हूँ, मैं सब्जी मंगाती हूँ, फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, कुछ भी हो, एक एग्रीगेटर के पास मेरा डिमांड जा रहा है, उस पर्टिकुलर बंदे से को पता भी नहीं है कि मैंने क्या मंगवाया है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस इंटरमीडियरी आई गेट द प्रोडक्ट आई वांट एंड इट इज एडवांटेजियस टू मी बिकॉज मैं तो मार्केट में गई भी नहीं. सो वी आर बेनिफिटिंग बिकॉज ऑफ द इंटरमीडियरी कल्चर. बट एक प्रॉब्लम जो इंटरमीडियरी के साथ आती है, हमेशा दे अप्रोप्रिएट अ मच ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ द प्रॉफिट मार्जिन. तो एक वे में वो क्या करते थे, एक ताल्लुकात बहुत सुंदर थे, वो मर्चेंट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ फैमिली मेंबर ऑफ दैट हाउस. वो लोन चाहिए होता था, वो उनको दे देता था, उनसे प्रोडक्ट्स चाहिए दे देता था, उनको रॉ मटेरियल चाहिए दे देता था, विद द अंडरस्टैंडिंग दैट व्हेनेवर द प्रोडक्ट इज मेड it will be given to the merchant. और होता था, people were largely following what they had committed. Word of mouth was important. Hyundai system was another thing, which was again India's strong point. Our promissory notes were encouraging trade despite not being in today's modern world. So with the flexible manufacturing system, which I just informed, advantages of which were merchant was the intermediary communicating the requirement from rest of the world to the households, and depending upon how much excess was demanded or less was demanded, वो production को ऐसे कर देता था कि demand was generally equal to supply and reserves were not maintained, which was a very good system. And today's systems are again, as I said, they are again back to the flexible manufacturing system. But difference is, at that point, manufacture was manufacturing by hand. Today, it is more of manufacturing by technology, machines, and these days it is more of data-driven production, which we are talking about. The moment we talk about Industry 4 revolution, यहाँ पर भी brick and mortar से भी हम हट गए हैं. दूसरी चीजें हमारे पास आती हैं इसके बाद, which we must ensure the kinds of systems which were created in governance mechanism. Governance क्या था हमारा इस system को करने का? तो अगर आप अर्थशास्त्र को भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले अगर उससे आपको पहले तो वैदिक पीरियड है, फिर मौर्यन पीरियड है, फिर आपका गुप्ता पीरियड है, उसके बाद चोला डायनेस्टी एंड अदर्स आर कमिंग.
बट इफ आई पिक अप द मौर्यन पीरियड के अंदर हमारा एक सुपरिटेंडेंट ऑफ शिपिंग होता था। शिपिंग को रेगुलेट करने के लिए, इसका मतलब रूलर ने एक सुपरिटेंडेंट ऑफ शिपिंग, जिसको बोलते थे नौका अध्यक्ष। नौका इज योर बोट, अध्यक्ष इज द सुपरवाइजर. So there used to be at that port somebody who's kept. I've moved away from flexible manufacturing system to effective governance mechanisms. ऐसा नहीं है कि जिसको भी पोर्ट पे जाना है वो चला जाए. No, we have structures which are there. So there is a supervisor which is known as superintendent of shipping, which is the नौका अध्यक्ष. उसके साथ साथ हमारे पास होता था superintendent for travel documents. ट्रैवल के जो डॉक्यूमेंट्स होते थे उसको हम मुद्राध्यक्ष कहते थे. So there was another terminology given in the organizational hierarchy which is created by during the Maurya period to take care of trade which is happening through the sea port. And we also had Panyadhaksha, who would only oversee the regulation part of the trade. तो आपने उसको भी अलग अलग हिस्सों में बांट दिया ताकि अलग हिस्से से क्या होता है, वी आर एबल टू टेक केयर ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल. मैं सारी चीजें देखूंगी तो आई कैन नेवर बी एन इफेक्टिव गवर्नेंस. That is why in the corporate world today, if there is a CEO, there is somebody who's taking care only of marketing, somebody only finance, somebody only HR. जब आप अलग अलग हिस्सों में ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की और स्ट्रक्चर्स को हॉरिजॉन्टल वे में डिवाइड करते हो तो एवरीबडी इज बेटर एबल टू गिव देयर बेस्ट एफर्ट्स फॉरवर्ड. सो इवन अंडर द सी पोर्ट दिस वी हैव सीन एंड दिस इज ऑल written documents in the Arthashastra, the way seaports were managed through, as I mentioned, Nauka Adhyaksh and other levels. So having said about the governance structures, I now go and also inform about other reasons because of which we were very good. एक तो हम लोगों की knowledge about sea routes was very strong right from the beginning. अगर हमारे भगवान वरुण हैं तो हमारे को उससे ओशंस का भी पता है, हमारे को स्काई का भी पता है, और अगर हम उसकी पूजा कर रहे हैं तो दैट सिंपली मीन्स दैट वी आर कंफर्टेबल विद मूवमेंट्स ऑफ सी, द ओशंस एंड ऑल्सो द स्काई. और जो भगवान वरुण का जो उनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो आज की तारीख में जोडियक साइन लेंगे तो वो कैप्रिकॉन है, मकर. तो वो अगर आप करते हो तो जिसको हम पूजा करते हैं इसका मतलब हमें उसकी अहमता पता है, वी नो उसका महत्व क्या है, एंड देयरफॉर वी हैव नॉलेज अबाउट इट. वी वर अमंग्स द फर्स्ट नेशंस हु न्यू द साउथ वेस्टर्ली विंड्स. और हम क्या करते थे उन दिनों का फायदा उठा करके अपनी बोट्स शिप्स को ही उस समय निकालते थे ओशन में व्हेन द विंड्स वर मोर फेवरेबल. सो द नॉलेज अबाउट द सीज एंड द ओशंस एंड द स्काई. स्काई का क्या, उस समय जमाने में आपके पास नॉटिकल माइल्स नोबडी न्यू, द पोल स्टार वुड गाइड यू वेयर टू टेक योर शिप. एंड अगर आप स्टार्स के बारे में जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानते हैं, पोजिशनिंग ऑफ द स्टार्स के बारे में जानते हैं, automatically we are better able to launch our ships and take them to the other routes through which we are selling. So our very fact of being culturally embedded and respecting nature, treating it so much कि आप उसको भगवान का दर्जा भी देते हैं, culturally that was also worked in our favor to navigate the sea routes. I think I would also now like to inform about certain other reasons which were beneficial. Anybody else who could say? Anybody else? Participants could unmute themselves and participate. और बताइए, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बता दिया, आवर नॉलेज अबाउट एस्ट्रोनॉमी एंड सी रूट्स बता दिया, और बताइए. Okay. Governance structures also I've discussed. We had very strong governance structures. एक और बताती हूँ, इसके अंदर है our kings at that time. उन्होंने कभी exploitation of the merchants जो बाहर की कंट्री से आ रहे थे उनको कभी नहीं करा. They were treated with a lot of respect.
इनफैक्ट अगर कोई मर्चेंट अपनी शिप लेकर के भी आया और उसकी डेथ होगी मान लीजिए प्रेमिसेस में, अर्स्टवाइल इंडिया के प्रेमिसेस में, हिंदुस्तान के प्रेमिसेस में, उसका जितना भी माल था उस शिप में आया, नेवर एवर वाज इट कॉन्फिस्केटेड एंड द रूलर केप्ट इट. It was kept in a safe custody until the next of kin of that merchant came and collected his stuff. So merchants felt safe कि भाई इंडिया से कोई भी चीज जाएगी, अगर हमने मान लीजिए इंडिया में नहीं भी सेल करनी है और कोई सामान इजिप्ट से आते हुए इंडिया के पोर्ट में सिर्फ लैंडिंग के लिए आया है बट नॉट फॉर सेलिंग, or even if it is for selling, partial trading के लिए आया है, then it has to go to the southeast coast, etc. They were comfortable that we will be treated with respect. And even the Muslim rulers did not believe in conversion of religion to the otherwise people who were coming from either the western or the eastern coast. So it's a more open kind of a system in terms of accepting your own religion and respecting the religion of the other person, and also not eyeing the product of the other country's merchant in an adverse manner. और ये बहुत जरूरी भी है. आज की तारीख में भी आप जब किसी के साथ ट्रेड करते हैं तो उसके ऊपर बिलीफ होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. नॉट एवरी टाइम मनी इज एक्सचेंज्ड हैंड्स एट द सेम टाइम. आज ट्रेडिंग होती है, पैसा 60 दिन बाद जाता है, 90 दिन बाद जाता है. So faith with the other partner is very important. So India was always very good on those terms. Another was inherently we have been very, very good artisans. अगर आप कश्मीर की शॉलें देखें, उसकी कढ़ाई देखें, आप पॉटरी के ऊपर पेंटिंग देखें, गोल्ड के ऊपर कार्विंग्स देखें, हम लोगों के inherently we have an advantage of being good handcraft working. वो तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे हमारा पूरा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गया, बट अगर हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इतने सालों तक, सालों मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, if we maintained the top position, it was because we were producing quality products at a price which is a competitive price. सिर्फ क्वालिटी देने से नहीं होता, आपको वो क्वालिटी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पर भी देनी पड़ती है. सो वी मेंटेन्ड दैट एंड रिजल्टेंटली हमारा जो मैक्सिमम गोल्ड जो हम लोगों ने एक्यूमुलेट करा, इट वाज लार्जली बिकॉज ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स ऑफ टेक्सटाइल्स, कॉटन, सिल्क. सिल्क चाइना से भी आता था. इनफैक्ट व्हेन यू टॉक अबाउट द चाइनीज सिल्क रूट, इंडिया वाज आल्सो एन एक्सपोर्टर ऑफ सिल्क. चाइना से हम इंपोर्ट भी कर रहे थे. सो इन लिटरेचर यू विल रीड अबाउट द सिल्क रूट. चाइना का चाइनीज सिल्क आता है और हमारा अपना भी जो कांजीपुरम सिल्क है, साउथ का सिल्क है, मैसूर का सिल्क है, असम का मोगा सिल्क है. वी ऑल्सो हैव एन एडवांटेज. कश्मीर में भी सिल्क है. सो इंडिया ऑल्सो हैज वेरी गुड सिल्क, बट इंडिया बिकॉज चाइना वॉज नॉट कनेक्टेड विद द डायरेक्ट सी रूट, बहुत सारा हमारा चाइना से आता था इंडिया में, कांची में ही आता था और वहां से जाकर के वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और इधर वेस्टर्न वर्ल्ड में भी जाता था. सो इंडिया वॉज बोथ इम्पोर्टिंग but also exporting silk, importing more of Chinese silk and exporting, as I mentioned, more of our own silk, which was from Kanji silk, or as I mentioned, Assam silk, which is Moga silk, and other kinds of silk products. इसके अलावा जो हम लोगों के अंदर एक खासियत थी, जो हम आज की तारीख में देखते हैं, we have Delhi Haats, we have fairs, we have trade fair. All this was a routine matter in historical times, and historical is, we talk about the Vedic era, the Maurya period, the Gupta period, the Chola dynasty. ये throughout में अगर आप कहीं ना कहीं आपको लिटरेचर मिलेगा तो उसमें से दिख जाता है कि इंडिया इज एन एग्जिबिटर ऑफ फेयर्स, ट्रेड फेयर्स. तो जब आप एक मर्चेंट अपना आइटम्स को ट्रेड फेयर में दिखाते हैं, देन यू क्रिएट डिमांड, बिकॉज people who are not aware of that product. Through trade fairs, it connects the potential buyer with the supplier who wants to sell that product. So most of these things we had already started much earlier than other countries did.
And I think it's very important to understand that because of these systems, our goods always maintained a very, very strong quality. Anything else that a query is coming up from someone which you think I should address, या आपने कुछ अपने तरफ से बोलना है, आप please interject करके I would just like to listen to your views for next 2 minutes. Anything that you want to speak related to trade, preferably traditional, but absolutely fine if you take it to the contemporary issues of trade, both within the manufacturing side, services side, or the agricultural side. So I just open it up for the house. I think Dr. Rajiv was mentioning some comment. Dr. Rajiv, would you like to please share your words? Anybody else? कुछ भी बता दीजिए. I like it when the मैम बहुत बहुत धन्यवाद मैम. मुझे लगता है कि संवाद बनाने की शैली काफी आपकी अच्छी है मैम. बहुत बहुत आपका आभार. चूंकि इससे संवादहीनता की स्थिति नहीं बनती है. मुझे ऐसा लगता है कि आर्थिक उदारीकरण के बाद जो है सिल्क उद्योग, कपड़ा उद्योग, कुटीर उद्योग पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. हमें इस तरह की नीतियों का निर्माण करना चाहिए ताकि हमारे जिस तरह से बनारस के जो कुटीर उद्योग हैं, हस्तकरघा भागलपुर के हैं, इस पर भी कुछ प्रभाव पड़ा है. तो हमें लगता है कि कुछ स्वदेशी की भी धारणा हमें बनानी चाहिए ताकि हमारे जो छोटे उद्योग हैं इस पर जो है इस पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ते हुए हम स्वदेशी की ओर आगे बढ़े. मेरी ऐसी मान्यता है. बहुत अच्छा सर आपने कहा. अगर आप भूटान का भी, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर वन ऑफ द इंटरनेशनल एजेंसीज ऑन एग्रीकल्चर इन भूटान. उनका 2 चीजों के ऊपर उनका निर्धारित है ग्रोथ विथ हैप्पीनेस. अगर आप ग्रो कर रहे हैं लेकिन अगर आप एज अ कंट्री, एज अ नेशन, एज अ हाउस होल्ड हैप्पी नहीं है तो उस तरह की ग्रोथ को वो ज्यादा नहीं महत्व करते. और दूसरा है ग्रोथ विद कल्चर. ग्रो करना है तो अपने कल्चर के साथ लेकर के करें. इनफैक्ट उनकी मिनिस्ट्रीज में भी जब हम जाते थे तो उनके जो पर्दे हैं, उनके जो ऑफिसेस के अंदर कुशन्स लगे हुए हैं, इवन द ड्रेस विच दे वर वेयरिंग, दे हैड टू बी द भूटानीज ड्रेस. तो जब मान लीजिए कोई भी फॉरेन नेशनल आता है तो वो सबसे पहले तो उनके ऑफिसेज में जाएगा तो उसको कल्चर पता चल जाता है. इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, और वो नेगेटिव ये है कि जब मैं भी जाती थी, थोड़ा लेड बैक एटीट्यूड है. आप ड्राइवर को बोलो बेटा थोड़ा सा तेज कर लो, तेज मतलब विद इन द लिमिट्स, रूल हम भी नहीं तोड़ेंगे, उल्लंघन नहीं करेंगे. मैडम क्या फर्क पड़ रहा है? वो अब हर कोई पूरी कंट्री के अंदर एक अपने ही पेस पे चलता है, किसी को हरी नहीं है. पॉजिटिव क्या है? दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू बी हैविंग अ मेंटल टेंशन. हम बाहर वाले आते हैं तो हमें होता है टेंशन, लेकिन उनके अंदर एम्बेडेड है पूरी ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है. अब वहां के सेब इतने इतने से हैं, हम लोगों को तो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड वाले डाल करके इतने बड़े सेब चाहिए. दे आर नॉट प्रोपोगेटिंग ऑर्गेनिक. दैट इज द फर्स्ट कंट्री विच हैज सेड 100% ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर. अब प्रोडक्टिविटी तो कम होगी क्योंकि वो ना फर्टिलाइजर यूज कर रहा है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कर रहा है, इनऑर्गेनिक नहीं कर रहा. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्राइसेस वहां बढ़ेंगी, लेकिन सस्टेनेबल के अंदर वो सिस्टम जाएगा. तो आपने बिल्कुल सही कहा सर कि जब हम ग्रो कर रहे हैं तो हमारे को ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपने कल्चर से जुड़े होकर के ग्रो करें, और जो हमारे वहां का प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन में हैंडीक्राफ्ट वर्क पीछे ना रह जाए. और इसमें मेरे ख्याल से जो आजकल की हमारी पॉलिसी चल रही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो ये बहुत बढ़िया है क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट को अपना वो प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा जिसमें उसका कंपैरेटिव एडवांटेज और वो पीछे से चलकर आ रहा है, और उसको गवर्नमेंट भी प्रोटेक्ट करेगी. So 1 district 1 product is a step in the right direction, and I'm very hopeful with this kind of a thing. सर आपने जो बात कही है कि हम अपनी पुरानी चीजों को बिना छोड़े हुए नई चीजें अपनाएं, वो सही प्रकार का ही ग्रोथ पाथ होगा. Ma'am, I think just to add to the summation of what comments were coming, the spirit with which they are writing is that we should be vocal for local. I think that's the need of the hour. Yes, with which yes. we must be, Yes. taking our trade to the next level, that we have to internationalize our local trade. बहुत बढ़िया. Level.
बहुत इनफैक्ट इस बार तो ईयर ऑफ द मिलेट्स है. मिलेट्स को तो कोई पूछता भी नहीं था. इट वाज समथिंग व्हिच वाज मेंट फॉर द नॉट सो वेल ऑफ हाउसहोल्ड्स. Yes. ज्वार, बाजरा, रागी. Or up all of a sudden, when it has become a year of millets, international consumption of millets has magnified. So the districts which are producing millets are also now able to trade millets, not just domestically, but also create an international market. तो participants का viewpoint बिल्कुल सही है, बिल्कुल, कि अगर आप लोकल चीजों को ही ग्लोबल वर्ल्ड में सेल करेंगे तो वो सस्टेनेबल मेथड होगा जिसमें एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हानि नहीं आएगी. Yes. Any Apart other from comment? sustainability, one more thing maybe that we Indians always had, given our treasure of knowledge, was about not being overly greedy. Maybe Yes. somewhere merchants and the manufacturers somewhere managed to play that also well, and that is why the long-term sustainability of everything. मैम बहुत सही कहा आपने. जो हमारे पुराने उपनिषद और ये सब हमारा धर्म का चल रहा है कि सत्य की जीत, ये कहीं ना कहीं हम सबके अंदर एक जगह पे ये बैठ चुकी है कि इफ यू वर्क विद विदाउट एनी मैल इंटेंशन, दैट इज द ट्रू विन इन द लॉन्ग रन. और हम लोग तो कितनी देर तक कह रहे हैं कि हमारा एक पीरियड भी था जो सतयुग का पीरियड था. तो उस पीरियड में बिल्कुल आपने सही कहा. हमारे अंदर अगर इफ वी आर कनेक्टेड टू आवर सेल्स, ऑन योगा इंडिया प्रैक्टिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, बुद्धिज्म हैज इमर्ज फ्रॉम हियर. सो इफ यू आर कंफर्टेबल फॉर योर विद इन इनर सेल्फ and you are not greedy but you are aspiring to become wealthier, no harm in that, but not because of exploiting others but in a win-win situation. तो बिल्कुल सही. हमारा ये बिल्कुल सही कहा आपने. मैं भी भूखा ना रहूं और दूसरा भी भूखा ना जाए, ये हमारे कहीं ना सबके अंदर है ये. बिल्कुल बिल्कुल. एनी अदर ऑब्जर्वेशन? Yeah, ma'am. Yeah, good afternoon. Myself, Savita Rastogi again. You know, Yes. I feel that this is a good, initiative of the university and the Department of Commerce that, and, all other organizers, that this kind of course is being offered as a course. And, because though we believe in using local things, but it is very difficult to convince the younger generation so far to use Indian things, and they still go for foreign outlets and all that. So for example, we are going to have freshers party in our college, so girls were saying we will distribute chips and all that. I said no, we will get small packets of Revlis made and distribute that. So with great difficulty they have accepted it. So let's see how far they follow it. मैम आपने तो बहुत अच्छा बोला, बिल्कुल सही. लेकिन मैम कई बार चेंज मैंने अपने लाइफ में ही देखा है. दो बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आते हुए जो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन से ही आएगा. और पहला तो ये देखा था मैडम, हम लोग भी जब मार्केट में जाते थे तो प्लास्टिक में लेकर आते थे. बट देन जब स्कूल्स के अंदर ये एजुकेशन शुरू हो गया दैट प्लास्टिक बैग्स आर नॉट गुड. आई रिमेंबर माय डॉटर इन सेकंड और थर्ड, नाउ शी इज मैरिड ऑफ कोर्स, but she told me, mama, no, we are not bringing a plastic bag from the cooperative store that we are going to. So एक बार जब बच्चे ने बोल दिया तो उसके बाद तो माँ कभी भी नहीं करेगी, because you can't afford to become a not so good model for role model for your daughter. And it's not that I brought that change. मेरी बेटी के स्कूल ने उसको ये सिखाया और ये पूरी हर स्कूल में ये चीज चल रही थी. उसी तरीके से जो मैंने दूसरा चेंज देखा है वो पटाखों का है. And my own son again, now again married, but there was a time as a parent 15 दिन पहले वो शॉप्स में पटाखे आते थे और हम गन लेकर के वो पटाखों की लड़ी उसमें चलाता था. मोस्ट पॉल्यूटिंग. एंड द स्कूल स्टार्टेड दिस दैट दिस इज नॉट गुड टू पॉल्यूट और इसमें चाइल्ड लेबर यूज हो रही है. विद द रिजल्ट द नेक्स्ट टाइम देयर वर नो पटाखास एट द होम. The credit goes to whom? The teachers in the school. So madam, I am very sure कि जो आपने रेवड़ी बेचने का और डिस्ट्रीब्यूट करने का आज बोला है, it is a matter of time. Your students will take this forward, not just for other generations, but even to other colleges. So my compliments to you for that, ma'am. Thank you, ma'am. Okay.
Now, how many of you, especially the non-economics and commerce, would know the difference between vertical integration and horizontal integration? एक कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स में जिसको हम लिंकेजेस बोलते हैं. आपने कोई भी एक प्रोडक्ट बनाया, बनाने के बाद वो अभी इंटरमीडिएट स्टेज पर ही हो सकता है या फाइनल भी हो सकता है. आपके बनाने के बाद वो किन किन हाथों से आगे को जाता है, दोज आर द फॉरवर्ड लिंकेजेस दैट दिस प्रोडक्ट जनरेट्स. आप जब ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपने जिस से ये रॉ मटेरियल आपके पास तक आया, वो इसका बैकवर्ड लिंकेज है. तो जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं और हमें पता है कि किसी भी सरकार के पास हिस्टोरिकल टाइम्स में भी हमेशा मनी वाज ऑलवेज स्केर्स. द वेरी रीजन वी ऑल स्टडी इकोनॉमिक्स इज बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, डिजायर्स एंड वांट्स आर अनलिमिटेड. सो क्वेश्चन आता है, ये पैसा कहाँ लगाया जाए, ये रिसोर्स को किस जगह पे टाइम दिया जाए. और उसके अंदर भी हम लोगों का जो वैल्यू एडिशन था, इट वाज ऑलवेज towards labor intensive product. Usme employment was generated. And this is also the philosophy which many of my participants are propagating, which Gandhi ji also tried to bring about. So Gandhian philosophy of growth is ghar ghar charkha, which means each one of us should be working in such a manner that it is a self-sustained manner, self-sufficiency में. वो हमारी पुरानी तरीके की ही डेवलपमेंट है. आफ्टर इंडिपेंडेंस वी अडॉप्टेड द रशियन मॉडल ऑफ ग्रोथ. पंडित नेहरू जी के टाइम पर हमने जब सोचा कि अब हमने गांधीयन फिलॉसफी के थ्रू ग्रोथ करनी है या नेहरूवियन फिलॉसफी के अंदर करनी है, इट्स नॉट एक गलत है या एक ठीक है, दोनों का टाइम पीरियड इज डिफरेंट. सो इंडिया अडॉप्टेड द नेहरूवियन मॉडल. हमारा जितना भी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, हमने उसको वापस री इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरह गए, लेकिन री इंडस्ट्रियलाइजेशन विद कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी. महात्मा गांधीज व्यू वाज री इंडस्ट्रियलाइजेशन विद द कॉटेज इंडस्ट्री. तो अगर वी डोंट नो व्हाट वुड हैव हैपेंड हैड वी अडॉप्टेड द गांधीयन मॉडल, बिकॉज दैट इज अ काउंटर फैक्चुअल सिचुएशन. इट नेवर वाज अडॉप्टेड. बट द क्वेश्चन इज, मे बी, आई डोंट नो, maybe at that point in time we would have been better off, but maybe over time the growth rates may be much lower. Whereas with the Nehruvian model, the initial phase of the levels were low, but the growth rates were higher. लेकिन जहां आपने कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को हाथ लगाया, क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा रीजन ही यही है दैट द अमाउंट ऑफ पावर, फ्यूल एंड एनर्जी दैट इज बीइंग कंज्यूम्ड by our industrial products is so huge, it has become a major contributor to the CO2 emissions. So somewhere we lost track of the global world. और किसी ने कहा लोकल को करो. आज के तहत अभी G20 की चल रही है, G20 प्रेसिडेंसी, और मेजर मुद्दा क्या चल रहा है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ही नहीं है. हम सब ने अपना अपना सोचना शुरू कर दिया. अब अपना अपना कोई, उसका पॉजिटिव नेगेटिव मैं बताती हूँ. इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ी बात है, 5 इकोनॉमिस्ट हैं तो 6 सॉल्यूशन है, और उनमें से कोई भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है. लेकिन हम लोग डिबेट करते हैं, डेलिब्रेट करते हैं और किसी नतीजे पे पहुंचते हैं जो जनरली कंसेंसस का नहीं होता है. G20 के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कैसे करें. इंडिया बोलेगा व्हाई शुड आई रिड्यूस माई एमिशंस, I'm just growing, I'm an emerging economy. Europe and America are historical countries which have contributed the maximum. So CO2 emissions, maximum reduction should be by them. China, Russia, India, which are the BRICS economies, Brazil, Russia, India, China, South Africa. तो BRICS हमारे emerging economies हैं, और हमारा क्योंकि emerging economy है, high growth है, और एक बहुत बढ़िया हमारा एक इन्वायरमेंटल कुजनेट्स कर्व हम बोलते हैं. अगर आप ग्रो करोगे तो इन्वायरमेंट शुरू में डिप्लीट होगा ही होगा. तो कंट्रीज जो इमर्जिंग है वो कह रही है, हमसे क्यों कहा जा रहा है कि हम अपना CO2 इमिशन को कम करें. अगर मैं कम पोल्यूट करूंगा तो मेरी ग्रोथ भी कम होगी. तो पोल्यूशन कम करनी है तो डेवलप्ड कंट्रीज को करें, वो अपना ग्रोथ को कम करके करें, बिकॉज देयर इज अ ट्रेड ऑफ. सो दीज आर इश्यूज विच आर कमिंग. Now, if India is bothered about only its own GDP and every country is bothered only about its own personal growth rate,
प्रॉब्लम आएगी तो ग्लोबल को कौन देखेगा? तो कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है, लेकिन आपका भी बिल्कुल कहना सबका सही है कि वो कोलैबोरेशन जो हमारे को बिल्कुल बाहर की ही चीजों को अपनाने में टूवर्ड डाइवर्ट कर दे, दैट इज नॉट द सस्टेनेबल वे। और यहाँ सस्टेनेबल मैं क्लाइमेट चेंज के आधार पे नहीं बोल रही हूँ, सस्टेनेबल क्योंकि अगर आप बाहर के प्रोडक्ट्स को करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट यहाँ कम होगी। लेकिन जो लोग ट्रेड में बिलीव करते हैं वो कहते हैं आप अपने आर्टिसंस को भी प्रोड्यूस करवाइए, उनको आप ट्रेड करिए और बाहर की चीजों को इंपोर्ट करिए। सो देयर आर फिलोसफीज। सम पीपल से इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इज बेटर, some say export promotion is better. Some economists like Panagaria are international trade promoters, while Stiglitz says trade can also lead to greater inequality. तो आप अंदर देखिए, सो हर एक में प्रोज एंड कॉन्स है, ये हर कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है, उसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस तरीके के सिस्टम्स और रूल्स को लाइए जो आपके नेशन के लिए तो अच्छे हैं ही हैं, साथ में वो किसी तरह से बाकियों को बहुत एडवर्स सिचुएशन में नहीं करें। एनीथिंग एल्स, आई एम अगेन ओपन टू इट। So, okay, so now I will just inform what are the major commodities that are being exported at that time, and these are long trends: silk, porcelain, camphor, wax, sandalwood, cardamom. Cardamom spices में आता है, हमने sandalwood भी बहुत export करा है, our incense sticks were well known. साथ में gold, silver, copper भी हम लोगों ने, gold largely उसके अंदर value addition के बाद export होता है, और इसी के साथ साथ स्पाइसेस, मेडिसिनल हर्ब्स। अगर आप विकिपीडिया भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से पुराने जमाने में सम ऑफ द ऑपरेशंस वर आल्सो बीइंग कंडक्टेड थ्रू द ट्रेडिशनल मोड, सर्जरीज वर बीइंग कंडक्टेड। सो वी हैड अ होल्ड इवन इन मेडिसिन, एंड इट्स नॉट जस्ट द herbal medicine, there are other kinds of naturopathy, we have been very good, mental health we are very good, overall wellness जितना इंडिया में बात हुआ है ओवरऑल वेलनेस का हिस्टोरिकली, वो तो कहीं हुआ ही नहीं है। इंटरनेशनल योगा डे तो आज आया, इंटरनेशनल मनाया गया, हमारे तो घरों घरों के अंदर योगा। समवेयर वी लॉस्ट ट्रैक, बट इट हैज अगेन कम टू द फोरफ्रंट। कॉर्पोरेट सेक्टर टुक अवे द मेंटल पीस, नाउ वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस। बैलेंस किसी की नहीं होती है, लेकिन एटलीस्ट वी आर ट्राइंग टू वर्क टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन वेयर वी नो दैट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली, and then your society, your nation is important. So we are all historically imbibed with these value systems. And अगर हम लोग बोले हम import क्या करे थे internationally, तो आपका जो मेसोपोटामिया का जो रूट आता है, जो इजिप्ट से लेकर के आता था, अरब कंट्रीज से होते हुए आता था, फिर पर्शियन कंट्रीज में जाते हुए आता था, इट वाज लार्जली ऑफ हॉर्सेस। हॉर्सेस हम लोग हजारों में इंपोर्ट करते थे। सो किंग्स का जो बनता था, पूरा का पूरा किंगडम की इन्फेंट्री बनती थी हॉर्सेस की, वो इंपोर्टेड होते थे, और हॉर्सेस के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई होता था, एंड वी कुड नॉट रेयर आवर ओन गुड ब्रीड ऑफ हॉर्सेस, सो ट्रेडिशनली वी यूज्ड टू इंपोर्ट। एनिमल प्रोडक्ट्स भी ज्यादातर इंपोर्ट में ही जाता था। वाइन वॉज ऑल्सो इंपोर्टेड, वी वर नॉट टू गुड विद द वाइन प्रोडक्शन। एंड रिजल्टेंटली व्हेन बिकॉज ऑफ आवर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, अगर हम बात करें कि हमारा ईस्टर्न इंडिया में कौन से सेंटर्स हमारे आए, तो अगर आप मैं स्लाइड में ही आपको दिखा देती हूँ। ईस्टर्न इंडिया के अंदर ढाका इज वेरी वेरी फेमस, मुर्शिदाबाद, पटना, बनारस, असम ईस्टर्न इंडिया के अंदर आए। फिर हमारा वेस्टर्न इंडिया के अंदर सूरत आया, हमारा जयपुर भी आया, अहमदाबाद वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट place. So if you just look it up, then when we come to central India, Agra, Aligarh, Gwalior, Lucknow, Firozabad, these were very good centers, all created because of the international trade. Similarly, North India में हमारा अमृतसर, लुधियाना, कश्मीर, this is the segment which is producing wool products primarily. अमृतसर आज भी कितना सारा वूल प्रोडक्ट हो रहा है, कश्मीर से हमारा वूल आता था, कारपेट्स आते थे, पॉटरी भी आती थी। देन साउथ इंडिया के अंदर वी नो कांजीपुरम, मदुराई, these came up in the southern coast. So because of the
preeminent centers and the kinds of trade that was taking place. There were several routes which came up. One was the Silk Route. Then Silk Route connected India to China as well as the Roman Empire. So China से भी इंडिया में आ रहा था, इंडिया का भी रोमन एम्पायर में जा रहा था. उसके बाद it was also going to the Southeast Asian nations. So it is a whole very largest track of one of the routes is our Silk Route. Spice route has also been very famous. Our spices were world known. Similarly, we have the salt route, incense stick route, there is a tin route, there is an amber route, several others, but most famous was the silk and the spice route for the Indian economy. And with this, largely, whatever I had planned, I now take the opportunity of summarizing it. Very importantly, you have to understand how important is trade for the economic development of the country. And economic development in terms of both inclusive development and sustainable development. Inclusive का मतलब है हम उस तरह तो ट्रेड नहीं कर रहे हैं कि मेरा खुद का एम्प्लॉयमेंट हट रहा है, हमारा खुद का हैंडीक्राफ्ट कर रहा है. अगर इस तरह का ट्रेड है जो इंक्लूसिव नहीं है, वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट मोड में सबको ले आएगा. जहां पर हम आज हमें बात क्यों करनी पड़ी है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट या वॉइस फॉर अ लोकल प्रोडक्ट इज बिकॉज वी हैड लॉस्ट साइट ऑफ दिस काइंड ऑफ अ डेवलपमेंट फिलॉसफी. Sustainable is not just look at the monetary aspect of trade, but also ensure that we leave enough for our future generations. We must maintain a good climate. अगर हम उसको मद्देनजर कर के आगे ग्रोथ पाथ पे जाएंगे तो अगले 2 generations के बाद तो पानी भी पीने के लिए नहीं मिलना. And if that kind of a thing happens, then it is often said the future of the country will be not ones with guns, but the ones with grains. खाने को ही नहीं मिलेगा तो वो कंट्री डेवलप कैसे होगी. और जब तक हम इसको ग्लोबल लेवल पे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, क्लाइमेट चेंज को, किसी भी कंट्री का ग्रोथ, नेशनल ग्रोथ बड़ी देर तक मायना नहीं रखेगी. एंड इसके ऊपर काम बहुत कम हो रहा है, पैसा भी कम. क्लाइमेट चेंज के ऊपर फाइनेंस कहाँ से आएगा? यू हैव टू फाइनेंस फॉर क्लाइमेट. यू कांट अफोर्ड कि आपका 2 डिग्री एंड अबव ट्रेंड लाइन से टेम्परेचर चला जाए. जैसे ही टेम्परेचर जाएगा, temperatures will rise, both maximum and minimum, and rainfall volatility will increase, which will impact food security and practically every other aspect of production which is taking place in an economy. India was very rightly, you mentioned, we were not greedy. Our inherent value systems were very good. We were accumulating gold not through exploitation. हमने किसी के कंट्री को लूट मार करके गोल्ड नहीं कलेक्ट किया, अपने जेन्युइन ट्रेडिंग से करा, क्वालिटी प्रोडक्ट दे करके किया, कॉस्ट कॉन्शियसनेस को करते हुए दिया, और साथ में जो ट्रेड के तहत लोग आते थे, वी वुड रिस्पेक्ट बोथ देयर प्रोडक्ट्स, ऑल्सो देयर रिलीजन. And this made us become and accumulate a lot of gold, which I mentioned was about 15% of the global gold reserves. And also at that point, we were contributing to 25% of the global GDP. We mentioned about systems where there was a zero-sum game. Trade was considered that gains from trade have to be zero-sum. But later on, philosophies moved on to say, no, trade can also be a win-win game. And it is with that philosophy we are taking forward that trade can be a win-win game, but उसके अंदर आपको local production को कैसे reserve करना है, one district one product को कैसे करना है, उसके तहत ही आप बाकी के countries के साथ trade करोगे. But an important issue which is still unsettled is if tariffs are being reduced by the developing countries on goods that are being manufactured by the developed countries, then why is it that the WTO is failing in its negotiations to reduce the subsidies which are being given by the developed world primarily to their agricultural goods? It's a big question that we have to talk about. And India has actually taken a lead. We are now the leaders for the South Asian countries to voice this. और इस पृथ्वी को अपनी माँ समझते हुए पूरी कंट्रीज को आगे जाना, और ये हमारे कल्चर में एम्बेडेड है. ये ट्रेडिशनली वी आर ऑल नोइंग भारत हमारी माँ है. अगर माँ है तो आपको सिर्फ
अब अगर हर कंट्री सोचे my own nation is my mother, then protecting the mother, if each one of us starts doing, we are going to achieve a win-win situation even on other fronts, in addition to growth which is inclusive as well as sustainable. We then moved on to say that how centers came up in East India, West India, Southern India, Central India, and what were the major export and import items, and what were the major routes that were created. And we also conclude by informing what led to India becoming such a superpower. Two important philosophies were our governance structure, very well written in Arthashastra, and the second one was our flexible manufacturing system. In addition to one more, which I mentioned, was our very knowledge about the sky, ocean, and the water systems. Astronomy was very good, which helped us in taking our ships out on those days when the costs would be lower and the probability of the ship sinking would be the least. And we were very good at shipbuilding additionally. With this, I wish to thank my participants for giving me this opportunity to share some of the thoughts on a very, very broad topic. I know I have not been able to do justice because it's a very broad topic, but to the extent I've been able to introduce certain concepts and open the minds to study more in understanding the historical perspectives, I think I would have partially done my job. Thank you so much for this opportunity. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thanks a lot for enlightening all of us and taking us through this entire journey of how we started with our net gold reserves and to where we have come so far. I think if we were to actually celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav, as you also mentioned, we really need to be inclusive in terms of our trade and be sustainable for future generations to come. So I think we would truly be celebrating Azadi in the true spirit. Thank you so much, ma'am, for your enlightening words. Thanks a lot. I'm seeing several thank you notes, and Yes, rather than ma'am. putting it there, I just wish to thank my participants. We are as good as our participants. Thank you for contributing. Thank you. Thank you, ma'am. Thanks a lot. I would request the audience, the participants, to please mark their attendance for this session. We will have the next session at 4:15 p.m. by Professor Ajay Kumar Singh. We would also like to bring to your notice that in case you haven't submitted the no objection certificate yet, please do so at the earliest, as that would be required at your end. Thank you so much. We'll see you all at 4:15. Ma'am, hello. Yes, sir. Ma'am, ये हम लोगों को certificate कब मिलेगा? So please give us 15 days of time once the short-term program is done, and we'll definitely be submitting the certificates to you. Through email? Yes, sir. It would be sent to all of you through email. Okay, thank you, ma'am. Thank you so much. Okay, thank you so much. मैम मेरे भी एक जिज्ञासा है, क्या ग्रेड प्रणाली द्वारा निर्धारित किया जाएगा? A+, B+ इस श्रेणी में भी दिया जाएगा? So the short-term program team will take a call on that, and we will get back to you on that also. Thank you so much. See you all at 4:15.